मोस्ट लाइकली ट्रीटमेंट क्या है। सो डर्मेटोलॉजी में बेसिकली वन, यू नीड टू नो डिफरेंट स्किन लीजन्स और इनकी प्रेजेंटेशन। आई वुड से कि जो ये वाली स्लाइड है, जस्ट यूज इट एज अ रेफरेंस स्लाइड। जब भी आप इन सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, come back here and try and see what these lesions look like. So lesions में आपने दो तीन चीज देखनी है. One, size. Is it smaller than 1 centimeter or larger than 1 centimeter? And two, you have to see whether that lesion is flat or raised. So macule is a flat lesion. It's non-palpable because वो flat है, इसलिए if you simply touch it, you are not going to be able to tell whether ये raised है या नहीं. It has a different color than the surrounding skin. It's less than 1 centimeter in diameter, and causes can be vitiligo or UV light exposure. And treatment is sunscreen and steroids. So papule is similar to macule, except it's raised. So it's small, less than 1 centimeter diameter. उस sense में it's similar to macule. लेकिन the only difference is कि ये 3 dimensional है. It's a raised lesion. So treatment is largely going to be the same. इसमें भी हम steroids दे सकते हैं, लेकिन we would इसकी still जो एक papule की further चीजें हैं, additional जो चीजें हमने देखनी होती हैं, those involve not scrubbing. Anybody has any idea हम इसमें scrubbing क्यों avoid करेंगे? So these lesions are filled with pus. You don't want कि अब वो pus जो है वो बाहर surrounding skin को infect करे. So you don't want to break any lesion that is filled. कोई भी vesicle हो, कोई भी papule हो, even अगर acne हो, something as benign as that, इसमें a good piece of advice is कि आपने उस चीज को touch नहीं करना या उस चीज को scrub नहीं करना. You don't want to break that lesion open and infect the surrounding skin as well. So you're advised to use warm water when cleaning and not put any makeup or perfume on that area of skin, and let the affected area get as much air as possible. So a nodule is similar to papule except it's more than 1 centimeter in diameter. Nodule और papule में सिर्फ और सिर्फ difference होगा size का, कि ये raised lesion है लेकिन it's a larger raised lesion. So a vascular papule or nodule is known as hemangioma. Hemangioma is something you see जब कोई injury हो और bruise इस तरह बन जाए. अगर वो bruise 2 dimensional हो, यानी कि it's within that skin, so that bruise may be a macule. अगर वो larger है तो you may classify as something else. लेकिन अगर that bruise is 3 dimensional, तो that and उसमें फिर underlying vessels जितनी भी हैं skin की वो broken है, तो now this is a hump, abdominal pain if it's in abdomen, and changes of voice if it's in vocal cords. So the reason for hard lump is कि यहाँ पे जब भी कोई wound होगा वहाँ पे tissue factor आता है जो पूरी clotting cascade को stimulate करता है, and eventually you see a clot in that area. So the types of nodules that you can see could be lymph node nodules, vocal cord nodules, lung nodules, and thyroid nodules. So some of the causes include injuries, infections, hormones, iodine deficiencies. So hormones usually cause करते हैं excessive formation of a tissue. For example, thyroid, अगर हम की बात करें thyroid gland की, so one of the interesting things या unique features of thyroid gland is कि ये hyperthyroidism में भी इसमें नोड्यूल बनता है और hypothyroidism में भी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक्सेसिव TSH है और एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन हो रही है, then the nodule is going to be because of excessive hormone stimulation. But if you are deficient in iodine and you have hypothyroidism, then उसमें भी you can see nodule formation, which is why thyroid gland जो है उसकी simply palpation पे या physical exam पे diagnosis हम नहीं कर सकते. हम clinical features की terms में देखते हैं कि whether hyper reflexes हैं या hypo reflexes हैं, and then we make our final diagnosis by means of our laboratory tests. So treatment of nodule जो है it could be medical as well as surgical depending on nodule जो है उसका क्या size है and कौन सी उसकी site है, what do we think about the risk of cancer, और अगर कभी भी cancer suspected हो, for example
कोई मेलानोमा है, एक मोल है एंड यू आर सस्पेक्टिंग कैंसर, कोई थायराइड हार्मोन है और आपने स्कैन्स किए, योर इन्वेस्टिगेशंस शो a possibility of cancer. So in those case, you may or may not undergo surgery directly, और रेडिएशन और कीमोथेरेपी जो है उसकी या उसको सर्जरी से हम पहले कर सकते हैं टू shrink the size of the nodule before we perform surgery, or we can use them as an adjunct to surgery. So the next thing is plaque. Plaque is similar to papule except it's larger than 1 centimeter in diameter. So symptoms are going to be sudden onset of fever and chills, headache, fatigue and malaise, and muscle ache. Can anyone quickly tell me an example of a disease which is commonly tested and उसमें commonly tested क्योंकि ये common है population में relatively, और उसमें plaques नजर आते हैं हमें. मैम सोरियासिस. Yes, psoriasis. So psoriasis जो है, I would say that's an important disease as मतलब exam point of view से. So psoriasis जो है, उसमें हमें plaques नजर आते हैं. So prevention is going to be rodent-free home, keeping your pets free of fleas, wearing gloves, and using insect repellents. So the reason for that is कि psoriasis जो है वो एक autoimmune disease है, और इसके अलावा जिन diseases में हमें plaques नजर आते हैं, most of those are arthropod-borne disease. आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई इंसेक्ट जो है या कोई ना कोई फ्ली उस डिजीज का कैरियर है. सो जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू डोंट गेट bitten by insects or fleas can be a good prevention for this type of situation. So vesicles are small, fluid-containing blisters, and they could be caused by allergic reactions, dermatitis, contact dermatitis, and cold sores as well. So treatment would be reducing symptoms. एंटीहिस्टामिन्स जो हैं ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपको डर्मेटोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ट्रीटमेंट में मिलेगी. whenever we have an inflammation process going on, antihistamine is going to be a possible treatment. Particularly कौन सी type of hypersensitivity है जिसमें antihistamines useful होती है? मैम टाइप 1. टाइप 1. सो एलर्जिक रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो सब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस सेम नहीं होते. फॉर एग्जांपल स्किन हीट को ले लें. स्किन में डिफरेंट डिफरेंट लेजन्स हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से है, लेकिन उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, सो दे वोंट हैव द सेम ट्रीटमेंट. जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है कॉमनली नोन एज एलर्जिक रिएक्शन, वो होती है IgE मीडिएटेड और उसमें हिस्टामिन रिलीज होता है फ्रॉम मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स और उसकी ट्रीटमेंट होती है एंटीहिस्टामिन्स. जो टाइप 2 एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो होते हैं एंटीबॉडीज की वजह से, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो है, और उसमें हम यूजुअली इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं. जो टाइप 3 आपके हैं हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं. कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ स्किन पैथोलॉजी जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हुई है? सिस्टेमिक लूपस. जी, सही मैम. सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस. सो उसमें स्किन के ऊपर फेशियल रैश होता है, बटरफ्लाई रैश. उसकी सारी की सारी स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं. अब वो आप एंटीहिस्टामिन से ट्रीट नहीं कर सकते, वहां पे यू आल्सो नीड इम्यूनोसप्रेसेंट्स. टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी की एग्जांपल है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने कोई निकल की बेल्ट पहने रखी हो या कोई आपने ज्वेलरी का पीस पहना रखा हो, एंड व्हेन यू टेक इट ऑफ या इवन व्हेन यू वर वेयरिंग इट burning की sensation हो and there are red marks very similar to the area of contact. So उन cases में भी antihistamine are not going to work. Another thing that can cause both type 1 and type 4 hypersensitivity is mentioned here in this slide, that's poison ivy. So poison ivy जो है ये certain plants के साथ exposure की वजह से होती है, and this can be treated with both antihistamines and इसमें type 1 और type 4 hypersensitivity दोनों present है. So vesicles can be accompanied by other serious symptoms such as inflammation or infection. So one thing that you should know about skin is कि जितना large area involved होगा उतना ज़्यादा chance है कि that patient might eventually develop shock. The reason for that is जब भी कोई पैथोलॉजी होती है, यानी कि स्किन में लेट्स से बर्न की हम बात करते हैं,
burn या vesicles, all of these are going to lead to shunting of blood towards your skin and away from your organs. Which is why हम burn में हमेशा ये देखते हैं कि whether 30% body area involved है, 60% body area involved है, या more. So a higher degree of involvement means a greater risk of shock. Particularly bone में burn में हम कौन सी type of shock देखते हैं? Different types of shock में. Hypovolemic. Hypovolemic shock. So if it's a burn, then chances are you will see hypovolemic shock. And if it's an allergic reaction, then you can potentially also see anaphylactic shock. So vesicle की एक example है bullous pemphigoid. It's a type of autoimmune disorder that affects older adults. It is typically treated with steroids. इसके अलावा bacterial infections हो तो those are treated with antibiotics. Vesicles caused by eczema are treated with glucocorticoids. जो eczema है वो है typically जिसको हम कहते हैं dermatitis. So typically जब लोग describe करें कि किसी area में उनको बहुत ज़्यादा itching हो रही है and then they say कि basically allergy हो रही है. So that is a layman term for eczema या फिर dermatitis. So retinoids जो हैं वो basically responsible हैं for maintaining the epithelium. Retinoid जब हम word use करते हैं तो remember this is a vitamin A derivative. Vitamin A is a retinoic acid chemically. So retinoids can be used in the treatment of both dermatitis as well as acne. और glucocorticoids जो हैं these are steroids. Hence वो किसी भी form of inflammation को कम करेंगे और ये हम eczema की treatment में use कर सकते हैं. So blister or vesicles caused by burns will be treated with prescription burn creams. You may also be prescribed oral antibiotics to reduce the chance of infection. So bala are large fluid-containing blister. They can be 0.5 centimeter or more in diameter. So treatment can be home treatment, medical or alternative. So alternative treatments include aloe vera, compression wrap, painkillers and wet black or green tea bags. और medical treatment इसकी भी वही होगी steroids जो हैं those can be given and some sort of painkiller can be given if these lesions are painful. So lichenification mean basically अगर हम literally देखें it means hardening of an area. So इसमें दो possibilities हो सकती हैं या दो overlapping चीजें हो सकती हैं lichen simplex chronicus and then we have lichen simplex. So lichen simplex chronicus को हम neurodermatitis भी कहते हैं. It's a patch of skin that has been lichenified. So this is a result of severe and chronic itching. So sometimes it's related to severe anxiety or OCD, but it can be because किसी जगह पे inflammatory response जो है that produces the sensation of scratching, and then because of that behavior, because of long-term scratching, उस area की जो skin है it becomes thick and leathery, scaly and bark-like, and you see raised patches of skin that are red or dark, somewhere like this diagram. So treatment is going to be fluticasone propionate. जो fluticasone है ये एक corticosteroid की ही example है. इसके अलावा corticosteroid creams, steroid injections, antihistamines and soothing moisturizers. Light therapy can also be used for lichenification. So nummular lesions are coin-like lesions. They are a type of eczematous lesion. They can be pink, red or brown. They're well defined. A yellowish crust can develop अगर staph aureus infection occur कर जाए, and you can also see itching or burning. So about staph aureus, most skin infections जो हैं, they're going to be caused by either staph aureus or streptococcus. So अगर उनकी treatment की बात की जाए, I think for you guys you'll have a higher it would be correct to say antibiotics, लेकिन definitely your answer will have more power if you know exactly which antibiotic. So the way we treat staph aureus and streptococcus is कि सबसे पहले हम penicillins देते हैं. अगर penicillin particularly methicillin में resistance हो, then we call that strain of staph aureus MRSA. MRSA stands for methicillin resistant staphylococcus aureus. Does anybody know कि MRSA अगर हो तो हम कौन से एंटीबायोटिक देते हैं?
अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो, the next antibiotic we use is vancomycin. So burn that fact in your memories कि हमेशा हॉस्पिटल में the reason it's important is you may have a patient with a pneumonia जिसमें मेथिसिलिन रेजिस्टेंस है. अब उसको आप पेनिसिलिन दे रहे हो, then that simple infection, like अगर even if वो बहुत localized infection है, it can eventually progress and become lethal. So you need to know कि antibiotic resistances जो हैं उनमें हम क्या करते हैं जब when we encounter them. So penicillin resistance अगर आपको मिले staph aureus के केस में, then you give vancomycin. So causes can be metals including nickel and rarely mercury, such as from your dental fillings. Formaldehyde, medicines such as neomycin, which is an antibiotic that you apply to the skin. So mostly जो basically nummular lesion is a sort of contact dermatitis. So most जो areas हैं coin like lesion इसमें होती है, most of these are going to be as a result of direct contact between the person's skin and some sort of metal. Yeah, it could be because of poison ivy, formaldehyde. Formaldehyde में अगर आपने gloves के पहने बगैर if अगर contact हो तो उस area में भी nummular lesion हो सकती है. इसके अलावा जो दो और causes हैं, those could be either a bacterial infection because of staph, or it could be a medicine such as neomycin. So not many medicines have this side effect. Lekin two classes of medicine, in fact, neomycin जो है इसकी class में बाकी सारी की सारी जो aminoglycosides हैं, they do not necessarily produce this form of dermatitis, but neomycin is famous to produce this particular form of dermatitis. Another class of antibiotics produces dermatitis. Anybody has any idea कि हम जब dermatitis की बात करते हैं और antibiotics की, तो वो कौन सी antibiotics हैं? So those are going to be sulfur containing antibiotics. And the reason sulfur containing word is important is क्योंकि अगर आप किसी भी person में किसी एक sulfur containing drug से allergy है, then you can automatically assume that he is going to be allergic to any shampoo, any soap, any hair dye, or anything in fact जो उसको topically जो कोई भी चीज उसको touch कर सकती है skin को और वो sulfur containing हो. So hair dyes are one of the things जो कि commonly use होते हैं. They have sulfur in them, and in fact all your shampoos have sulfates in them. So अगर किसी person में sulfur allergy हो, or even if he does not have a huge allergic reaction or response to that sulfur, हो सकता है कि over time sulfur की जो toxicity है in that person, so that dermatitis may not develop instantly, but over time chronic exposure की वजह से these patients can have a dermatitis that is difficult to treat. So treatment is going to be protecting skin from getting scraped, cut or injured ताकि आप prevent कर सको कोई भी bacterial infection. Hydrating your skin. So hydration या moisturizer, emollients, petroleum jelly, whatever you want to say इसके बारे में. Overall hydration is the single most important treatment in prevention of scratching. So जो भी mostly scratching is a result of an infection or dryness, and more it's more likely to be dryness than an infection. So uski treatment is going to be hydration. And medicine jo hai, that is going to be used as directed by dermatologist. So dermatologist is going to diagnose whether इस area में contact dermatitis है, allergic reaction है या फिर कोई infection है, तो उस लिहाज से उस area की treatment होगी. So a pustule is basically a blister containing pus. It usually presents as white bumps surrounded by red skin. So pustules की एक जो example है, जो most commonly used example है या most जो population में होती है common, that's going to be acne. So acne can be caused by hormonal imbalances. It's a very common skin condition. And acne जो है इसकी treatment में there can be some over the counter acne medications, but I would say कि आपको acne की treatment में जितनी भी possible drugs हैं उनका mechanism of action आना चाहिए.
So you can use some topical disinfectants such as peroxide, salicylic acid and sulfur. Particularly salicylic acid जो है ये बहुत commonly use होता है in the treatment of acne. More advanced acne में we also give antibiotics such as clindamycin topically. मोर एडवांस इससे भी ज्यादा अगर केस जो है इस चीजों से ट्रीट नहीं हो रहा देन वी गिव रेटिनॉइड्स. सो रेटिनॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो सरफेस एपिथेलियम को मेंटेन करती हैं और इन रिफ्रैक्टरी केसेस जिनमें ये सारी की सारी चीजें अफेक्ट नहीं कर रही द पेशेंट कैन स्टार्ट टेकिंग ओरल एंटीबायोटिक्स. सो उसमें भी जो ओरल एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं उसमें डॉक्सीसाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन. These are the antibiotics that are used in this situation. और अगर ये भी वर्क ना करे तो लेजोथेरेपी और some sort of phototherapy can be used. So the next discussion is going to be that of atrophy. Atrophy means loss of tissue which may affect the epidermis, dermis or subcutaneous fat. You see a thinning of the epidermis, wrinkles and loss of pigment, translucent appearance, sclerosis of the underlying connective tissue, telangiectasias and diminished blood supply. So ulceration is loss of whole thickness of epidermis and epidermis. Healing results in a scar. So symptoms are going to be a rash or dry skin, brownish discoloration, a foul smelling fluid oozing from the sore, redness or swelling of the surrounding skin, and worsening pain. Does anybody know कि ulcers के लिए biggest risk factor क्या है? Skin ulcers के लिए. So skin ulcers are very commonly seen in diabetics. So the reason for that is that these patients have neuropathy, which means they will not know कि कोई wound है, क्योंकि pain is usually one of the first signs of a wound or an injury. So since उनमें वो sign blunted है, so they do not instantly pay as much attention to a wound as they should. Then they have vasculopathy, which means कि blood supply diminished है, and they because of these reasons, their skin ulcers are likely to be much more advanced जब आप उनकी treatment seek करते हो. So which that's why diabetics में particularly diabetic foot care जो है that's a separate class of medicine कि जिसमें उनको हम कहते हैं podiatrists. So diabetes जो है उसका एक strong relationship है to skin ulcers. और delayed wound healing जो है उसके बाकी जो भी causes हो सकते हैं all of those can be linked to skin ulcers. So they may take a very long time to heal. Treatment is typically to avoid the ulcer getting infected, which means आपने prophylactic antibiotic ointments देनी है, removing any excess discharge, maintaining a moist wound environment, controlling the edema, and easing pain caused by nerve and tissue damage. So erosion means superficial loss of epidermis, which generally heals without scarring. Acne is a skin condition जो हम already pustules में discuss कर चुके हैं. Hair treatment of acne में कुछ चीजें जो हैं, so acne की treatment I think आपके इस lecture में 2-3 जगहों पे लिखी हुई हैं. I will repeat the treatment of acne and its order. First हम use करेंगे disinfectants. Those disinfectants can be peroxide, salicylic acid. Then we move on to our topical antibiotic. Topical antibiotic जो हम common use करते हैं इस case में that's clindamycin. Then we use retinoids. Retinoids जो हैं topical retinoids. These are vitamin A derivatives. And the last resort medication में that's going to be oral antibiotic. So उन oral antibiotic में जो first choice है like drug of choice that's going to be tetracycline. So tetracycline के examples है minocycline या doxycycline. इसके अलावा we can also use a macrolide. So macrolide जो है उसकी example है erythromycin. So these oral antibiotics इनको हमें इसको हम उन सारी टॉपिकल चीजों के बाद यूज करते हैं because we do not want कि पेशेंट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए. So boils are what we see जो कि bacterial अगर और fungal infection हो सकती है hair follicles की, or another term for it is a furuncle. The infected hair follicle can be on any part of the body, not only the scalp. When the hair follicle becomes infected, the skin around it becomes inflamed.
The furuncle looks like a red raised bump on skin and will rupture and weep fluid. These are most commonly found on the face and neck, and you might also develop a boil on your thighs or buttocks. So, psoriasis is an erythematous papules and plaques containing disease. So, इसमें silvery scaling होते हैं. The important thing to remember for this is one, it has scales. Two, ये extensor surfaces पे होती है mostly elbows और knees के. और इसके अलावा ये एक autoimmune disease है. So, since ये एक autoimmune disease है, the treatment is going to be steroids और बहुत severe cases में, particularly जिन cases में psoriatic arthritis हो, हम स्टीरॉइड्स के साथ इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी यूज करते हैं. सो जो उसकी ड्राइनेस है, उस ड्राइनेस के लिए हम सिंपली यूज करेंगे क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स. So phototherapy या ultraviolet treatment, that is also used only in refractory cases. So the next is dermatology lesion we can have is excoriation, which is a partial or complete loss of epidermis, and this is a result of scratching. Fissuring is when you see slits through the whole thickness of skin, और ये fissuring हम classically देखते हैं अपने heels के ऊपर. So desquamation is peeling of superficial scales, follows acute inflammation, and treatment is steroids. रेटिकुलेट पैटर्न जो है ये हम क्लासिकल कुछ डिजीज होती है, कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनमें देखते हैं. सो रेटिकुलेट पैटर्न जो है, this can be seen in Cushing's disease. So remember Cushing's disease या adrenal insufficiency, इन सब में steroids का excess हो जाता है. जो adrenal insufficiency है, that's because of loss of steroids, और जो Cushing disease है, that's because of excessive steroids. So both of these diseases presents with hyperpigmentation, लेकिन only Cushing disease presents with a reticulate pattern. So the reason for that is ये आप Cushing disease में भी देख सकते हैं और chronic steroid users में भी देख सकते हैं. The reason for that is कि steroid is responsible for thinning of epidermis. So जब thinning होगी skin की, तो underlying blood vessels are going to become visible, and that's going to lead to a reticulate pattern. So commonly seen when the pattern of blood vessels becomes visible. So eczematous dermatitis means कि an allergic response, yeah, it's a pruritic inflammatory disorder. So pruritic means कि itching होगी इस area पे. It could be because of an infection, chemical, or atopy. Atopy का मतलब होता है allergy. So morphological findings depend on पे कौन सी stage है eczema की. So an acute stage is going to look like the picture shown here, कि spongiosis होगा with vesicle formation. So the skin is going to have reddish appearance. Spongiosis means कि edema होगा उस area में, इनके fluid accumulation होगी. So chronic stage is going to have acanthosis, hyperkeratosis, and lichenification. Since chronic stage में बहुत ज़्यादा scratching की है patient ने, तो you can see thickening of the skin, जिसको हम lichenification कहते हैं. Hyperkeratosis means कि वो जो area है, that is going to have excessive keratin deposition. So this is another term for thickening of the skin. And एक्ैंथोसिस और एक्ैंथोलाइसिस, ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं स्किन के कॉन्टेक्स्ट में. रिमेंबर एक्ैंथोसिस इज कि आपकी स्किन जो है अब वो हाइपर पिगमेंटेड और ब्राउनिश हो जाती है और थिकनिंग हो जाती है उसकी. एक्ैंथोलाइसिस मींस कि उस एरिया जो है उसकी कहीं ना कोई एपिडर्मल लेयर जो है वो डिस्ट्रक्शन की वजह से सेपरेट हो जाएगी. Acantholysis term हम यूज करते हैं in the context of bulla या vesicles और papules, because जो vesicles हैं वो जब भी किसी भी epidermis में कोई fluid accumulation होती है, तो that also involves separation of layers of epidermis. So ये दो terms हैं, ये आपने confuse नहीं करनी. Remember, acanthosis is for eczema and acantholysis is for all those diseases जो vesicles जिनमें बन जाते हैं, जिनमें separation हो जाती है epidermis की. So a subacute stage is going to have intermediate changes between acute and chronic stages. So impetigo जो infection है, that's because of Staph aureus infection. It's common in children. You see an itchy rash and fluid-filled blisters that pop easily. Swollen lymph nodes भी इसमें देख सकते हैं. Treatment is going to be amoxicillin/clavulanate. Remember, first line treatment for staph is going to be augmentin या any form of penicillin. So amoxicillin जो है, that's the penicillin,
that we commonly use. Clavulanate is a penicillinase inhibitor. So penicillinase जो है वो penicillins का breakdown करते हैं और penicillinase inhibitor prevent that breakdown. And another treatment that we use is mupirocin, a 2% ointment. So mupirocin जो है, that's another antibiotic that we can use for impetigo. So pemphigus vulgaris जो है, it's an autoimmune disease जिसमें intraepidermal बुल्ले होते हैं. It's a potentially fatal disease. Treatment is dapsone, corticosteroids, and other medicines जो immunosuppressant होती हैं, such as azathioprine, methotrexate, cyclosporin, cyclophosphamide, mycophenolate, or rituximab. So as you can see, जो pemphigus vulgaris है, it may involve a large area of the skin, or in cases में it can potentially be fatal. So psoriasis is being repeated here. Photodermatitis, caused by the interaction of light and chemical absorbed by the skin, occurs in areas exposed to light. It may be due to drugs taken internally, such as sulfonamides, phenothiazine, and dimethyl chlortetracycline, or substances in contact with the skin, such as topical agents. So treatment हम इसमें use करेंगे antihistamines, local anesthetics, cosmetics, and antibacterial. So remember, local anesthetic जब भी हम term use करते हैं skin के context में, इसका chances are कि इस वक्त function होगा numbing का. Numbing as in it will take away the pain जो उस area की वजह से हो रही है. So pruritus जो है is a common term for itching. So इसके reasons जो हैं, these could be because of allergic reactions, it could be because of a drug reaction, it could be because of eruption, erythema multiforme, and vasculitis, though these are less likely to cause pruritus, और higher chances होता है कि कोई ना कोई systemic allergic reaction है या local allergic reaction है. So psoriasis can also cause itching. Plaques can cause itching. So another term that we use in the context of skin infections is lichen planus. So does anybody remember lichen simplex chronicus? हमने किस context में पहले पढ़ी थी? मैम आपने बताया था कि जब रेस पेप्यूल्स होते हैं उसमें ये होता है lichen simplex chronicus हमने papules से ज़्यादा, अगर हम इसको आप मतलब डिफाइन करो तो ये lichenification की टर्म्स में भी हम देखते हैं. पेप्यूल्स भी हो सकते हैं और lichenification की हेडिंग में भी you can describe it as an example of lichenification. So the reason I'm bringing that up is कि lichen simplex chronicus और lichen planus ये दोनों एग्जाम्पल हैं लाइकेनिफिकेशन की, यानी कि क्रॉनिक इंटेंस इचिंग की वजह से उस एरिया में कोई पर्टिकुलर फाइंडिंग हमें मिल रही है. सो लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस जो है उसमें थिकनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, वह लाइकेन प्लानस जो है इसमें यू सी अ फ्लैट टॉप्ड पैप्यूल्स. सो इसमें यू डोंट सी एज मच raised lesions as compared to lichen simplex chronicus. So both of these are examples of lichenification. So blistering disorders of the skin can also itch. So blistering disorders हम कहते हैं pemphigus vulgaris को और bullous pemphigoid को, कि कोई भी जगह vesicle formation हो वहाँ भी itching हो सकती है. Herpes simplex is a viral infection. It can also present with burning and itching. So systemic causes of itching can be an endocrine disease, hyperthyroidism, chronic renal failure, hematological iron deficiency, anemia, malignancy, carcinomas, psychological causes, topical infection or drugs. So कुछ चीजें हैं जो अगर बॉडी में स्किन में डिपॉजिट हो जाए या बॉडी में एक्सेसिव हो तो दैट कैन कॉज इचिंग. वन ऑफ दोज इज आयरन. अगर पोलीसाइथेमिया हो और आयरन का बॉडी में एक्सेस हो that can produce itching. Another thing that can cause itching is bilirubin. So जिन patients में hyperbilirubinemia होता है उनमें एक classical clinical sign ये है कि किसी hot shower के बाद उनमें बहुत severe और intense itching होती है. So itching can be because of several different systemic causes as well. So the investigations we order are skin scrapings for mycology, which basically means a fungal infection, patch testing for allergies, full blood count, ESR,
liver and renal function tests, urine analysis, and stools for blood and parasites. So treatment is going to be calamine lotion, which cools the skin with 0.5% menthol or 1% phenol in aqueous cream. So topical local anesthetics जो हैं they can give relief, लेकिन ये सिर्फ short term use किया जाता है बहुत intense situations में. You can develop intense allergic reactions as a result of those anesthetics. Antihistamines भी effective होते हैं partly because antihistamines topically भी effective होंगे और इसके अलावा orally भी. Orally अगर आप antihistamines लो तो they have a sedative action as well and they can cause drowsiness and put you to sleep. So अगर हम सिर्फ और सिर्फ short term use के लिए use करें antihistamines को then we use topical solutions. So lichen planus जो है like psoriasis the lesions are well defined and raised. There is no family history. Itching is common. Lichen planus जो है it's going to be a plain lesion और one thing about is कि ये मतलब आप P से याद करें कि this is a plain lesion. It has papules and they are purplish in color sometimes. So they can occur on the shin, palm, and soles, and they usually resolve over many months to leave residual brown or gray macules. So there is usually a gradual response to topical steroids, but in very extensive and inflamed lesions, systemic steroids may be needed. Localized hypertrophic injections can be treated with intralesional injections. So acne की treatment और boils जो हैं, these are being repeated here. Carbuncles is an infection of the skin that may be filled with pus. The infection usually occurs deep within your skin and involves the hair follicles. So remember hair follicles की दो possible diseases हो सकती हैं, furuncles या फिर carbuncles. So furuncles are small infections, localized, और carbuncle जो है ये वो skin infection है जो huge होती है. Size की terms में इन दोनों को आप differentiate करते हो. So most common cause इसका होगा staphylococcus और अगर more than one carbuncle हो तो उसको हम कहते हैं carbunculosis. So symptoms are itching before the lump appears, bodily aches, fatigue, fever, crustiness, and pus. So treatment is going to be antibiotics, painkillers, antibacterial soaps, and surgeries. अगर बहुत huge carbuncle हो तो उसके लिए हमें surgery के through उस area को clean करना होता है. So alopecia means hair loss. इसके तीन different types. Alopecia areata means कि patches में hair loss हो रहा है जिस तरह इस picture में shown है. Alopecia frontalis means कि you lose all hair on the scalp, and alopecia universalis means you lose all hair on the body. So symptoms जो हैं alopecia areata के वो patchy hair loss होते हैं and इसके अलावा nail problems भी हो सकती हैं. So alopecia areata जो है this is an autoimmune disease और इसकी treatment is going to be steroids. Minoxidil जो है वो हम किसी भी type of alopecia में use कर सकते हैं. Minoxidil basically cause hyperkeratosis. So ये hair जो है उनकी growth increase करती है and this can be used. However, minoxidil can have several side effects इसलिए never use it over the counter. ये सिर्फ और सिर्फ dermatological consult के बाद ही administer करनी चाहिए and knowing the risks and as well as benefits. So anthralin and diphencyprone are two also other forms of medications. लेकिन I would say कि आप सिर्फ first two treatments ही याद रखें because they are the more commonly used treatments. So mycosis fungoides एक skin disease नहीं है लेकिन ये एक lymphoma के साथ association में देखी जाती है. So it is a very common type of cutaneous T cell lymphoma. So T cells जो हैं वो cutaneous उनकी proliferation अगर हो तो that is mycosis fungoides. It is a slow growing form of cancer in which some of the body's white blood cells become malignant. These abnormal cells are drawn to the skin and some are deposited there. They are a special type of white blood cell called T lymphocytes. T cells regulate the body's immune system in its job of fighting infections and other harmful things in the body. So symptoms are rash-like patches, tumors or lesions. Itching is common and these symptoms are usually progressive और जो early stages हैं उनमें you see scaly patch. So common treatments of
The are simple sunlight, ultraviolet light, steroids, chemotherapies, and radiotherapies. Since ये cancer की एक form है, so we can use systemic and um, uh, superficial local radiotherapy. हिस्टोन डीएसिटाइलेज इनहिबिटर वोरिनोस्टैट हम यूज करते हैं. सो हिस्टोन डीएसिटाइलेशन जो है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन. द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज कि एसिटाइलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज करती है और डीएसिटाइलेशन ट्रांसक्रिप्शन डिक्रीज करती है. सो जब हम ट्रांसक्रिप्शन डिक्रीज करेंगे तो हमने सेल साइकिल को, डीएनए की जो आगे प्रोटीन्स उससे बनती हैं, हमने सेल साइकिल को किसी ना किसी पॉइंट पे इनहिबिट कर देंगे उसकी फर्दर प्रोग्रेशन को. एंड दैट्स हाउ दिस ट्रीटमेंट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंसर. So you can also use total skin electron radiation, photopheresis, and systemic therapies such as interferons, retinoids or rexinoids. So treatments इसकी अक्सर कॉम्बिनेशन में यूज करती हैं. So अगर टी सेल लिम्फोमा जो है वो हो बॉडी के अंदर और वो लिम्फ नोड्स में हो, then the treatment is going to be resection. लेकिन since skin के केस में अगर widespread area involved हो, then resection is not an option for us. और उन केसेस में वी यूज फोटोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी. So polymorphic light eruption is basically a term used for sunburns, rash or lesions caused by sun exposure, and they present with itching and burning. So lesions erupt a few hours to several days after sun exposure. They're mostly located on face, upper chest, या exposed parts. Risk factors are female, gender, teenage years or 20s, having light skin, and diagnosis अगर sunburn बहुत severe हो, or you can also sometimes it can look similar to a melanoma अगर उसकी dark appearance हो. So in order to make sure कि ये कोई मोल नहीं है या melanoma नहीं है, हम skin biopsy भी कर सकते हैं depending on the exact appearance of the lesion. So blood tests and photo testing जो है, these are also done. So phototherapy जो है, that's a possible treatment. फोटोथेरेपी में यूवीए या यूवीबी लाइट की मदद से हम ट्रीट करते हैं. सो अप्लाइंग एंटी इच क्रीम, एंटीहिस्टामिन्स, कोल्ड कॉम्प्रेक्सेस, leaving the blister alone and taking a pain reliever are also parts of the treatment. So you're advised to avoid the sun between 10 to 2 क्योंकि इस टाइम पे sun rays most intense होती हैं, and use sunscreen. So the next disease, as shown here, is vitiligo. So vitiligo means loss of melanocytes, यानी कि depigmented white patches होते हैं. So it's important to understand कि vitiligo में जो normal skin है, that's the dark skin, and the abnormal skin is the white area, क्योंकि वो loss of melanocytes की वजह से हो रही है. And melanocytes are the cells जो pigments produce करते हैं and they give color to that area of skin. So this is an autoimmune disease. ये genetic component इसका होता है और ये thyroid dysfunction के साथ भी देखी जा सकती है. So treatment can be an immune mediator or phototherapy. So topical preparations of immune suppressing medications including glucocorticoids and calcineurin inhibitors जो हैं, they are first line treatments. फोटोथेरेपी जो है वो विटिलाइगो की सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है. सो स्किन कैमोफ्लाज की जा सकती है कॉस्मेटिक तरीकों से, ऑल्दो दैट्स नॉट अ ट्रीटमेंट बट इट कैन बी ऑफ emotional help to the patient if he can help learn how to cope with it. इसके अलावा these patients may also require counseling अगर उनको बहुत severe anxiety हो because of their condition, and certain cases में we can also opt for depigmentated the unaffected skin ताकि जो ओवरऑल डिफरेंस है उसके स्किन के डिफरेंट पैचेस में वो कम हो जाए. सो डीपिगमेंटेशन के लिए these patients may use monobenzone, mequinol or hydroquinone. So removal of all the skin pigment with monobenzone is permanent and vigorous, and then उसके बाद these patients are advised to adhere to sun safety to avoid sunburns and melanomas. So hyperhidrosis means excessive sweating. So जो excessive sweating है
Basically, it can cause dehydration in the body. Excessive moist exposure की वजह से infections हो सकती हैं. Skin maceration can occur. These people have very strong odor. So cause is uncertain, but it's very likely associated with genes and excessive stress, emotion, or exercise. So these patients are advised to use powders and ointments, एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो की जा सकती है इन एडवांस केसेस या फिर आयनटोफोरेसिस जिसमें जो उनके एक्राइन ग्लैंड्स हैं यानी कि स्वेट प्रोडक्शन ग्लैंड्स हैं उनको हम स्टन करते हैं. सो बोटॉक्स इंजेक्शन जो है ये बोटॉक्स इंजेक्शन जो है इसको डर्मेटोलॉजिकली ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है और कॉस्मेटिकली भी यूज किया जाता है. So can anybody quickly tell me कि बोटॉक्स इंजेक्शन और कौन सी डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? कौन सी एक्लेजिया पैथोलॉजी है? एक्लेजिया Yes. Yes, achalasia. So Botox injection basically acetylcholine का रिलीज प्रिवेंट करता है. तो इसको हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जिसमें हम ये नहीं चाहते कि वहां पे acetylcholine की वजह से स्टिमुलेशन हो. So acetylcholine is responsible for muscle contraction. इसलिए एक्लेजिया में हम बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं ताकि वो जो एक्सेसिव कंट्रैक्शन हुई हुई है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की वो अब हम प्रिवेंट कर सकें. और यहाँ पे हम बोटॉक्स इंजेक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एसिटाइलकोलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स सो दैट दे कैन प्रोड्यूस स्वेट. सो बोटॉक्स इंजेक्शन जो है इट्स अ मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट. ये आयनटोफोरेसिस से हम प्रेफर करते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेजिया एंड एज वेल एज in the treatment of hyperhidrosis. So pityriasis rosea जो है, this is a fungal infection. It can have a large patch जिसे कहते हैं हम mother patch या herald patch भी कहते हैं और smaller patches as well. So signs and symptoms जो है mother patch जो है या herald patch वो तकरीबन 1 to 2 weeks present होता है and पेशेंट्स जो हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर पेशेंट जो है उसकी डार्कर स्किन है या लाइट स्किन है diagnosis can be easy or relatively difficult. So eventually जब daughter patches आ जाएं तो it can have a Christmas tree like appearance. Like जो इसकी जितने भी daughter patches होंगे they are going to be spread out and above and it can have a Christmas tree appearance. So in patients में कुछ patch free zones होंगे which is face, scalp, palms and soles, and skin can itch and about half the patient have itchy skin. So pityriasis rosea can go away without treatment, and some people have it for 2 weeks, and it can potentially last longer than 8 weeks. अगर patient में unbearable itching हो, तो a dermatologist may prescribe a medicine to help relieve the itch. So sometimes कोई light treatment या phototherapy भी हमने करनी होती है. So remember pityriasis rosea हो, another differential is fungal infection, which means कि आपने skin scrapings लेके देखना है कि इस area में कोई भी fungal infection तो नहीं है. So lecture 4 I would say, since this is GIT से related, so this should not be included in your first